Hello dear friends, once again welcome back to my channel Scientific Phenomenal Facts। आज का मेरा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट का ऊपर और पेडागोगी का ऊपर बेस करके कैसे हम लोग बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए उन लोगों का मानसिक विकास के लिए। How we have to treat with the kids or the childs for their mental development in a positive way. So, being a teacher, what should we have to do and how we have to react with the children so that they will get satisfied and their mentality will move towards positive direction. हालांकि यह स्कूल का ही टीचर नहीं होता है। हम लोगों का वास्तविक जिंदगी में जो कोई भी बच्चों को शिक्षा देता है अच्छा काम के लिए वही टीचर कहलाता है। सिर्फ अच्छा काम के लिए ही नहीं, मान लीजिए एक गलती कर रहा है, उस गलती करने से क्या डिफेक्ट हो सकता है, क्या डिमेरिट्स है उस गलती का, अगर बच्चों को हम लोग रियलाइज करवा सकते हैं तो ही हम लोग उस बच्चे का टीचर बन जाएंगे। School teachers are also teacher, and besides school, if we can able to teach the kids or the children some good things, some good manners which are beneficial for their future life, then we are considered ourselves as a successful teacher. तो उसके ऊपर बेस करके मैं मेरा आज का टॉपिक जो है कि कैसे डिफिकल्ट चिल्ड्रन के साथ पेश आना चाहिए एज ए टीचर का रूप में। मैं यहां कोई गुड स्टूडेंट या गुड चिल्ड्रन या बैड चिल्ड्रन नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी बैड चिल्ड्रन नहीं है। गुड चिल्ड्रन है और डिफिकल्ट चिल्ड्रन है। उस डिफिकल्ट चिल्ड्रन को हम लोग अच्छा साइड में ला सकते हैं अगर हम लोगों का खुद का एंथुसियाज्म है, मीन्स क्यूरियोसिटी अगर है हम लोगों का तब। लेकिन टीचर होने के लिए एक बहुत बड़ा क्वालिटी होना जरूरी है। सबसे पहला होता है पेशेंस। अगर धैर्य नहीं होता है, अगर सब्र नहीं होगा तो हम लोग अच्छा टीचर बन ही नहीं सकते। तो बीइंग अ टीचर or as a teacher, what should we have to do with the difficult children? Not about the easy children, means good children. They are good. They are already made. But those who are difficult children, we have to make them ready to face their future and make their future bright and shining. So first of all, what should we have to do as a teacher with the difficult children? We have to respect the child's personality. बच्चे का पर्सनालिटी को हमें रेस्पेक्ट करना है। कि कैसे देखिए आप लोग, अगर बच्चे का मान लीजिए कपड़ा थोड़ा मैला है तो हमें बच्चों से नेग्लेक्ट करना नहीं है, बल्कि उसको साजिश करना है। साफ सुथरा कपड़े पहन के आना तो बीमार नहीं पड़ोगे, ऐसा कुछ पॉजिटिवली हमें ट्रीट करना है। उन लोगों का पर्सनालिटी को रेस्पेक्ट करना है। नंबर 2, यूनिकनेस। मान लीजिए कुछ बच्चा हंसमुख होता है और कुछ बच्चा गुमसुम। Some are cheery minded and some are gloomy minded. So we should not have to scold them or love them partially. Second quality of a teacher must be impartial. First one is to keep patience. Second one, impartial. All the kids are our own kids. We have to think like that way. हमें सभी बच्चों को अपना बच्चा जैसा समझना है।
तो बच्चे का यूनिकनेस को हमें सम्मान करना है. वी हैव टू रेस्पेक्ट द यूनिकनेस ऑफ अ चाइल्ड. अगर कोई बच्चा गुमसुम रहता है तो हमें उसको मोटिवेट करना है कि आप थोड़ा अपने दोस्तों के साथ खेलो, बातचीत करो, तो आपका क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा. हमेशा पॉजिटिव साइड में बच्चे को धकेलना है, ना कि बच्चे को उदास करना है. थर्ड वन इज फैमिली बैकग्राउंड. हमें बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड को सम्मान करना है. वी हैव टू रेस्पेक्ट द फैमिली बैकग्राउंड ऑफ अ किड और ऑफ अ चाइल्ड. Here we should not have to think that a kid who is rich, if he or she laugh in the class or little show some fashion, this and that, we should not have to think that he or she is doing some proudness or this or that. हमें कभी भी बच्चों को ऐसा नहीं बोलना है कि आप अमीर है तो ज्यादा दिखाते हैं, पैसे का घमंड वगैरह. ये कभी भी नहीं करना है. और अगर कोई बच्चा गरीब है तो हमें कभी भी उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है. हालांकि हमेशा बच्चे को मोटिवेट करना है. और अगर बच्चा गरीब है तो हमें उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है या नजरअंदाज नहीं करना है. If a kid is poor or belongs to poor family condition, we should not have to ignore that kid. We have to well trained, well behave with that very kid, so that the kid will never realize about its family condition, so that the kid will mingle with us free frankly. Number 4 is feelings. तो हमें बच्चे का फीलिंग्स का भी सम्मान करना है. We have to respect the feelings of a child. That if a child likes some demonstration, some like some jokes, some like some fun, we have to respect and try to satisfy their hunger. हम लोग जो चाहते हैं टीचर का हिसाब से वैसा हमेशा होना जरूरी नहीं है. कभी कभार हमें बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चे का फीलिंग्स क्या है, उसका ऊपर भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सा बात बच्चे को चोट पहुंचाता है या ठेस पहुंचाता है और कौन सा बातें बच्चे को खुशी देता है, वो हमें समझना है. तभी ना जाके बनेगा एक प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट. नंबर 5 इज व्यूज. Number 5 is views. We have to respect the views of a child. That what is the point of view of a child? What the child need? It is also similar to the feelings. ये भी भावना का सिमिलर ही है. बच्चे क्या मांगता है टीचर से, उसका क्या नीड है, बच्चे हमें क्या समझाना चाहता है, वो हमें समझना है. मान लीजिए अभी हम लोग क्लास ले रहा है, कुछ बच्चा है वो अटेंशन पे नहीं करता है, तो उस वक्त हमें यह समझना चाहिए कि बच्चे का दिमाग में उस वक्त स्टडी टॉपिक नहीं है. उस वक्त बच्चे को चाहिए some other things like some jokes to draw its attention once again in the study. पहले बच्चे को खुशी देना है, उसको थोड़ा सुकून देना है, जोक्स वगैरह बनाकर उसको मोटिवेट करना है, तो दोबारा वो पढ़ाई में अटेंशन पे करेगा. ये सिर्फ पढ़ाई का केस में ही नहीं, ये हम लोगों का रियल लाइफ में है, रियल लाइफ में भी है.
जो पढ़ाई का बाहर में भी होता है। नंबर 6, रिलीजियन। As a teacher, we must have to respect the kids' religion. We should not have to be partial that he or she belongs to this religion or that religion, so we have to treat in a different way. It is totally illegal, which is not meant for the proper teacher or ideal teacher. तो हमें बच्चे का धर्म का ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बच्चा चाहे जो भी धर्म का हो, वो हमारा खुद का अपना बच्चा है। वही समझ के हमें बच्चे को अपनाना है और उसी तरह से शिक्षा प्रदान करना है। नंबर 7 इज कल्चर। We have to respect the culture of the child. Suppose in Raksha Bandhan, some of the girls used to put Rakhi on the hand of the boys. It means a sign of love and respect. We have to respect that culture. And in some other religion, like during Christmas, here some people used to greet in different way. They used to decorate some candles, lights on a Christmas tree. We have to respect. And some people used to greet during Eid festival or during Eid time. We have to respect each and everyone's religion. It's the duty of the teacher, of the original teacher, to become totally impartial and accept all the religion to be its own. Now number 8 is limitations. Here, it is the most important point which we should not have to ignore. We must have to respect and put much more focus on the limitations of the child. Here we are discussing about the difficult child. You can think it is weak child, but we should not have to express like that way. We have to think, we have to use the word difficult. Here, this is the important point, which one we have to respect mostly among the children. Suppose some children, they can easily solve the numerical simplifications, factorization, this and that. On the other hand, the difficult student, they can easily solve 1 plus 1, but they are unable to solve 1 plus 2 how much? 2 plus 2 how much? In that case, we have to become free frankly to those kids and make them understand according to their level of limitations. We have to find some alternative techniques to satisfy their expectations. Only then we can become considered to be as an ideal teacher and original teacher. So this is the fact what I have expressed in front of you from the topic of child development and pedagogy in the field of difficult children. How to be the impartment with them from the side of teachers. If we can able to follow all these points sincerely from the bottom of our heart, then it is my assurance that there will be no difficult kids will remain in this universe. All will become expert in, all will become highly intelligent. So this is my unique topic
from the field of child development and pedagogy. If you understood and if you were satisfied by my approachings, then please keep watching my channel, Scientific Phenomenal Facts. Thank you.